Welcome to VLearn. This is session number 4 on legal and ethical issues. The topics we are going to cover in this session are security disciplines to safeguard sensitive business information, legal, ethical and regulatory issues, ethical issues and employer monitoring internet usage, then list of ethical and legal issues when advertising, then how to handle ethical issues at workplace, then how do ethics make you better person at workplace, then law for pregnant women at workplace, then there will be the effect of gender discrimination in the workplace, then business security policies and procedures, then internet marketing ethical issues, then e-commerce ethical and legal issues. First of all, security disciplines to safeguard sensitive business information. Confidentiality is the term referred as the ethical and professional duty which is performed on not to disclose any inappropriate information to a third party. इसमें जो है कॉन्फिडेंशियलिटी में जो है हम लोगों को देखना होगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी थर्ड पर्सन के पास में नहीं जानी चाहिए. देन सर्टेन प्रोफेशनल्स हु होल्ड सर्टिफाइड कॉन्फिडेंशियली ऑफिसर सर्टिफिकेशन अप्लाई फॉर द कॉन्फिडेंशियलिटी बिकॉज ऑफ देयर लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट्स. कई सारे जो है सर्टेन प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास में जो कि सर्टिफाइड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफिसर्स होते हैं, देन उनकी जो सर्टिफिकेशन होती है उनके ऊपर अप्लाई होती है, जिसके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी वो कॉन्फिडेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी तीसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को वो कन्वे नहीं करेंगे. देन इन बिजनेस इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्रूशियल और सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन. बिजनेस में ये यूज किया जाता है ताकि टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्रिटिकल और सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन. Then reasons why business confidentiality can be important. वो क्या reasons हैं जिनके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि confidentiality बहुत ज़्यादा important है. To keep trade secrets and intellectual property away from business competitors. जो भी trade के secrets हैं, business के secrets हैं, उनको जो है business competitors से दूर रहना चाहिए. Then the proper dissemination of information about current business objectives or future objects may harm the business. So for employee security and for security of their families. Then even key for job security, it is very much important. Then it encourages employees to make use of services which are being created to help them. Then such as counseling or other employee assistance programs. Then it makes easier for the people to get help without any fear or damage to reputation or other relations. Then next comes confidentiality is based on 4 basic principles. जो confidentiality है ये 4 basic principles के ऊपर डिपेंडेंट है. Respect for a business right to privacy. Then second is respect for human relationships in which business information is shared. Then appreciation of the importance of confidentiality to both the business and its employees. appreciate करना importance को जो भी confidentiality के हैं और business को भी और employees को भी. Then expectations that those who pledge to safeguard confidential information will actually do so. Then next comes legal, ethical and regulatory issues. The Internet has reduced the geographical boundaries which help the organizations to conduct extensive research and planning to enter the e-commerce arena. Then internet technology has a great effect on the global trade which includes multitude of products and services. Then e-marketing tools used by the online travel industry helps the consumer to purchase travel services in convenient manner. Then next comes ethical issues and employer monitoring internet usage. इसमें then हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना, जो ethical usage है और जो employer है उसकी monitoring है internet usage में, like functions के point of view से, then what are the company policies, then company के rights क्या हैं, then considerations, then list of ethical and legal issues when advertising. जब हम लोग ethical और legal issues की लिस्टिंग करते हैं जब हम लोगों को एडवर्टाइजिंग करना होता है, देन द पॉइंट्स आर ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग, देन नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग टू चिल्ड्रन, देन नेक्स्ट कम्स एडवर्टाइजिंग हार्मफुल प्रोडक्ट्स,
Then next comes advertising tactics. Then how to handle ethical issues at the workplace. जो भी वर्क प्लेस पे एथिकल इश्यूज होते हैं उनको कैसे हैंडल करना है. स्टेप 1 इज डेवलप ए पॉलिसी एट वर्क प्लेस विच इज बेस्ड ऑन योर कंपनीज फिलॉसफी. उस पॉलिसी को अपने वर्क प्लेस पे जो है डेवलप करना है जो कि कंपनी की फिलॉसफी के बेस पे है. इस मिशन स्टेटमेंट एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इवन की इसका मिशन जो भी है स्टेटमेंट का, इवन की कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना है. देन इनकॉर्पोरेट द पॉलिसी इनटू योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम टू अपहोल्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस एंड इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड सुपरवाइजर्स. इनकॉर्पोरेट करना पॉलिसी को इनटू योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम टू अपहोल्ड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स throughout the employees job performance and interaction with peers and supervisors, providing copies of the revised handbook to employees. Then next step is provide workplace ethics training to employees. जो भी employees हैं उनको proper way से जो है workplace के ethics के regarding training provide करना. Then provide different instruction methods to employees to make them learn as how to address and resolve ethical dilemmas. Then an effective way to facilitate the ethical training at workplace is experimental learning or role play. Then next third step is designate an ombudsman person in charge of handling employees who helps in considering whether your organization needs an ethics hotline or not. उस person को employ करना जो कि इन employees की जो भी issues हैं और जो भी एथिकल इश्यूज होते हैं उनको प्रॉपर वे से हैंडल कर सके. देन एन एथिक हॉटलाइन इज ए कॉन्फिडेंशियल सर्विस थ्रू विच एम्प्लॉयज मे कॉन्टैक्ट whenever they encounter workplace dilemmas that make them uncomfortable or in threatening positions. The next is step 4. Whistleblowing pertains by research federal, state and municipal labor and employment laws. Then next is refrain from making employment decisions such as termination or suspension in connection with whistleblowing. Then seek legal advice for employee reports of workplace ethics issues that increase your organization's liability under federal, state or municipal employment law. The next is step 5. Applying workplace policy in consistent manner while addressing workplace issues and concerning employee about workplace ethics. Then communication with the same expectation for all employees, whether they are in executive positions or frontline products roles, and approach every issue with equal interpretation of the company policy. Then how do ethics make you a better person at the workplace? The points are trusting relationships. जो भी relationships हैं वो trusting relations हैं, trustworthy हैं. Then team cohesiveness. Then personal wellness. Personal level पे भी wellness है. So law for pregnant women at the workplace. Family leave act. Like अगर in case कोई भी woman pregnant है वर्क प्लेस पे, देन उसके लिए कुछ एक जो लॉज क्या हैं, फैमिली लीव एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली उसको फैमिली की लीव मिलेगी एक्ट के अकॉर्डिंगली. देन प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, अगर इनकेस प्रेगनेंसी है देन उसका डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है. देन हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के लिए उसकी जो इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड होगी. देन बेनिफिट्स एंड कंप्लेंट्स, बेनिफिट्स उसको अवेल होंगे और अगर इनकेस कोई कंप्लेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रॉपरली कंसिडर करना है. So, effect of gender discrimination at the workplace. अब जेंडर के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेशन जो कि वर्क प्लेस पे है उसका इफेक्ट क्या है. देन उस केस में क्या होगा, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो लॉस्ट होगी. देन इवन की प्रमोशंस के ऊपर भी इफेक्ट होगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उस पर इफेक्ट होगा. देन डिस्ट्रक्शन. नाउ बिजनेस सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. नो द थ्रेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी उस वहाँ पे थ्रेट्स है, चैलेंजेस है, उनको अच्छी तरह से हम लोगों को चेक करना होगा. देन वॉच आउट फॉर डॉस. जोन से भी वहाँ पे डॉस अटैक्स, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं, उनको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा. देन रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ द रन डायलॉग बॉक्सेस. जो भी रन लेवल पे डायलॉग बॉक्सेस एग्जीक्यूट होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करना है. देन नेक्स्ट इज इंटरनेट मार्केटिंग एथिकल इश्यूज. The internet marketing or advertising ethical issues have great importance.
द एथिक्स आर द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, जो इसके एक एथिक्स होते हैं वो कल्चरल वैल्यू होती है सोसाइटी की. इट इज द इंटरनेट मार्केटिंग in a society where legal and ethical issue limits are pushed to the max. Then the internet is a growing and a continually evolving creature that will live on in perpetuity. Then as such it would be wise to ponder the e-business, legal and internet marketing ethical issues. Next is importance of ethics on the internet. Using good ethical standards in online world reflects your business directly online and affects all aspects of your business. So अगर इन केस हम लोग देखते हैं यूजिंग गुड एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो इसके एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको यूज कर रहे हैं इन ऑनलाइन वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स योर बिजनेस डायरेक्टली ऑनलाइन एंड अफेक्ट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस. It affects your company's brand image and subsequently how sales, marketing and advertising principles are applied to the task of making your company profitable for the long period of time. Then it also affects your employees and how they represent your companies online. ये इफेक्ट करता है कंपनीज के ऊपर भी और ये कैसे कंपनीज में ऑनलाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ऑन द फोन इवन की इन पर्सन वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर रिलेशंस व्हेन डीलिंग विद बायर्स, इंजीनियर्स, sales leads and potential customers in both the business of B2B and B2C, both of which covers the majority of business types in world. B2B business to business or B2C business to customer. Then e-commerce ethical and legal issues. The vast use of internet advertising provides a solid platform for electronic commerce or e-commerce to explode. Then the e-commerce provides secure shopping. Then even की transactions coupled with instant verification and validation of credit card transactions, like credit card की जो transactions होती हैं वो भी properly जो है valid होकर के validation के base पे होगी. Then e-commerce is a technological innovation which is followed by frequent incorporation of ethical standards into law. The new forms of e-commerce enables new business practices with many advantages but also bring numerous risks. So ये जो न्यू फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स हैं ये इवन की बहुत अच्छी जो है बिजनेस की प्रैक्टिसेस हम लोगों के लिए प्रोवाइड करता है और बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. देन इवन की यहाँ पे समटाइम्स जो है कुछ रिस्क होने की भी पॉसिबिलिटी होती है. नाउ एथिकल एंड लीगल इश्यूज रिलेटेड टू ई बिजनेस. अब एथिकली और जो लीगल इश्यूज होते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो कौन कौन से हैं? एथिकल इश्यूज, देन नेक्स्ट इज वेब ट्रैकिंग, लाइक वेब बेस्ड जो है ट्रैकिंग होती है, इवन की प्राइवेसी यहाँ पे इसके बेस पे जो लीगल इश्यूज होते हैं. सो देयर आर 3 इश्यूज लाइक एथिकल, वेब ट्रैकिंग एंड प्राइवेसी. देन दिस intermediation and re-intermediation. Intermediation is one of the most important and interesting e-commerce issue related to loss of jobs. जो इंटरमीडिएशन है ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग ई कॉमर्स इशू है जो कि लॉस ऑफ जॉब से कंसर्न है. द सर्विसेज प्रोवाइडेड आर मैचिंग एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है मैच कर रहे हैं और उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. देन वैल्यू-एडेड सर्विसेज सच एज कंसल्टिंग. देन लीगल इश्यूज. Internet fraud and its sophistication have been grown even faster than the internet itself. जनरली हम लोग देखते हैं जो इंटरनेट के जो फ्रॉड होते हैं और इसकी जो सोफिस्टिकेशंस हैं ये ज़्यादा ग्रो हो रही है, हालांकि जो इंटरनेट खुद जो ग्रो हो रहा है उससे ज़्यादा ये ग्रो कर रहे हैं. Then there is a chance of a crime over the internet when buyers and sellers do not know each other and cannot even see each other. यहाँ पे जो है एक क्राइम का भी चांस है इंटरनेट पे जब बायर्स और सेलर्स जो हैं दे डोंट नो ईच अदर एंड कैनॉट सी इवन सी ईच अदर, जबकि वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते. देन मैनी फ्रॉड्स वर कमिटेड ओवर द इंटरनेट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू years ऑफ ई कॉमर्स एज द पब्लिक इज द विटनेस. देन द लीगल इश्यूज स्पेसिफिक टू ई कॉमर्स आर फ्रॉड ऑन द इंटरनेट, कॉपीराइट, डोमेन नेम्स. सो यहाँ पे जो लीगल इश्यूज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? इंटरनेट पे जो फ्रॉड होता है, देन इवन की कॉपीराइट के रिगार्डिंग कोई है उसका फ्रॉड हो सकता है, उसमें लीगल इश्यूज हो सकते हैं. देन डोमेन नेम्स के रिगार्डिंग लीगल इश्यूज हो सकते हैं.
So now we have some questions in exercises. How do ethics makes you better person at workplace? Then second is, what are ethical issues and employer monitoring internet usage? So that's all for today's session. Happy learning, we learning.